presentation. Namaste to all. It is my privilege to introduce Dr. Atmaram Pawar. He is working as in-charge principal and professor of the pharmaceutics at Poona College of Pharmacy. Actual biodata is very big, so I have taken only few points regarding him. He has obtained the doctoral degree in the pharmacy from Pune University and nurtured as a career in academics at alma mater PCP, Poona College of Pharmacy, Bharati Vidyapeeth, deemed to be University, Pune. He is having rich experience of over 30 years. He actively pursued research in the area of particle engineering, targeted anti-cancer drug delivery systems, nanopharmaceuticals, NDDS, phytomedicines, and patient care. He has having 4 patents and published 107 international and 32 national peer-reviewed research paper with Google Scholar H-index 33. Though more than 83 CEP for the retailers, continuous education program for the retailer conducted by the MPSC and CPD IPA. He has trained thousands of the pharmacists. That shows his dedication to the pharmacy profession. He dedicatedly involved in the pharmacy practice. He is recipient of the 11 prestigious awards that include International Award, Healthcare Leadership Award by World Health and Wellness Congress in the year 2020 and received 4 national awards including Fellowship Award 2018. He is appreciated by Maharashtra Sahitya Parishad for publication of more than 20,000 books. It is in Marathi and the title of the book is Aushadhi Ghetana. Now I request to Dr. Pawar sir to deliver his speech. Over to Pawar sir. Very good morning, all the participants and coordinator of this KYP, Dr. Jain, and thank you for my introduction also. So this is called as a title song, like a title type of lecture, where I will try to introduce the concept of NEP and its relation with the pharmacy. Yeah, Jain sir. Hello. Yes sir, slides are moving sir. Moving, no problem. So as I said in the welcome, so we are presenting this Pune College of Pharmacy, which is ranked 17th this year, 2021. And it is a part of Bharati Vidyapeeth, deemed to be university, and our parent organization is the Bharati Vidyapeeth. So we are providing a quality education in the pharmacy from day 1. Participants are requested to mute. Participants, please mute.
Okay, so we'll move forward. So Yes, sir. what we are all teachers, and always we have the objective of education, objective of research. But whether that objective is really fulfilled or not, and what is the objective is more important. As per me, objective of research most time is to publish few papers so that biodata will get. सर बोलो उनको ऑफ करने के लिए और otherwise you. Yes, sir. Participants, please mute yourself because a lot of disturbance is there. Yeah. So objective of research, sometimes publication to strengthen the biodata, and sometimes objective of even PhD is to fulfill the requirement that if we get a PhD, then we get that promotion, or before 10 years, it was a trend to have a PhDs mainly to get appointed of principal. Hello, Vishal Vandana. Sir, call her. So now we will see the objective of education, and as I written here, objective of education may be to get a good life partner. This is a trend going on. तो कार्टून में बताता हूँ इधर कि माँ बेटे को पीट रही है और बेटा क्या बोल रहा है इम्पोर्टेंट है. मैंने इसको कहा पढ़ ले, अच्छी बीवी मिलेगी. तो बेटा बोलता है कि पापा तो बहुत पढ़े हैं, he is also M.Pharm PhD. So what is our objective? Real to have a just higher degree for setting a life, finding a life partner, or a professional degree to get a good job, because previously there was BA, BCom science. Then from 2019 onwards, all the engineering, medical, they entered, and our education shifted to all these professional courses, because the professional course is better to provide a jobs than the regular science college degree or art commerce degree, higher education degree. So this is the objective, to have a good job and salary, or really objective is to get a knowledge and a lifelong learner. Because today's days are innovation, as there are many topics, innovation, skill development. There are very less job opportunities, but there is need to create a jobs. Therefore, there is skill development. So can we fulfill all these requirements just by getting a degrees, professional degree or higher degree, or by getting knowledge, or becoming a lifelong learner? Correct. And actually, this whole objective of NEP is based on this concept only, as per me. Therefore, I found this cartoon, and I think it is a more appropriate. Why it is, we see as per our perspective in a pharmacy what we do. What is the objective of education? As per my experience, your experience may be different. Of my experience, 28 years, is completion of syllabus is the main objective of any teacher. Whether it is semester pattern, annual pattern, complete the syllabus, have a sessional examinations, have a university examinations, and if our results are good means not 90%. It should be closer to 100%. And now in the online mode, it should not go above 100%. That we have to see. Otherwise, the things may be complicated, because there is guarantee that it may be above 100% also. Because nowadays score is very high. Almost our students get ranked, and almost 90% students, 70% students in the distinction category. So we get happy if our result is 98%, 99%, 100%, then it is a good. And previously, if the 100% result, then there was a value in the local media or the social media that we had a 100% result. But now that 100% result also not have any value. At least our students should appear in the university rank. So this is our objective. If this is our objective, then always my second slide is, are we missing something? Correct. This completion of syllabus
guarantee or assure that knowledge is transferred. If our aim is just completion of syllabus, then nowadays all MOOCs are there, swim videos are there, every faculty member now is preparing the videos. There are university college to college, there are websites, they are full with the videos and PPTs. So if this is the aim of completion of syllabus, MOOCs videos and the videos created by number of professors easily available on the web are sufficient to complete the syllabus. So if the completion of syllabus is the requirement, then big question comes whether the teacher will be required or not. To appoint the teacher just to complete the syllabus or to have a knowledge transfer, that we'll see one by one, and then we'll come to the NEP. Exams. Against what exams we are conducting are to check the understanding of concept, to check the thinking ability, or to check the memories, recitation. Why? Because till date, even in this online questions should be case based, but whether it is online or offline, our always questions are define, discuss and classify. Define, discuss and classify. Therefore, all these questions make a background to reset the things, and the student having a very good memory, photographic memory, he becomes first ranker in the college. Really he is having capacity to think or not, it becomes secondary. Results, measure skills, intellectual property, or its success in the life. Consider in the jobs also, no problem. So the results are measuring memory, memorizing handwriting, memorizing way of writing, or they are measuring the intellectual property. This is the missing point as per me. University rank. Okay, so find out the university rankers from your university and check their career growth. At least check there where they are in the GPAT examination, CAT examination or not. Immediately it happens. Meantime they disappear. Means in the university examination, he is a gold medalist of the university due to 29 marks of the 30 and 19 marks out of 20, where he disappears. This 29 marks or the 30 marks, what we given in the internal examinations, what is the base for that? So really it is our objective to have a 1 or 2 student in the merit list. Then where they disappears. Therefore, whether the marks and the result is the indicator of overall development of students, is the indicator of thinking ability, reasoning ability, is it indicator that the leaders are developed in the respective area, and not say that India needs only researchers, India needs market people, India needs the innovators, India needs some people who dance better, who sing better, many things. The pharmacy students can do all this. They should be manager in the marketing, they should be manager in the R&D, they should manager in the product development, they are HR, many things are there. So whether any of such a quality is developed or not, is it an indicator of the present system indicate that or not? So these are my points. Why this is happening? So my focus is again and again, and we have one article, very good article and survey on the interactive teaching. It is appeared in the IGPR in the last month only. So this our whole system is a teaching methodology and examination methodology. Exam में क्या होता है भाई? Discuss, define and classify हुआ तो रट्टा ही मार के आता है ना बेटा, रट्टा ही मार के आता है. वो फ्रेंड को बोलता है बस मुझे एक वर्ड बता दे, 10 मार्क का क्वेश्चन है, मैं पूरी स्टोरी लिख दूंगा. तो स्टूडेंट को तो फ्रेंडशिप निभानी पड़ती है, तो वो स्टूडेंट देता है फर्स्ट वर्ड द, अभी लिख भाई एक स्टोरी लिख तू. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली आवर सिस्टम इज in Marathi I can say it is a ghoka, oka and thoka. Recite करो, उधर लिख दो, कुछ भी लिखना है बोल दो, 2 पेज भर दो, लगता है नहीं लगता है फ्लो चार्ट निकाल दो, अच्छी सी डायग्राम निकाल दो. 3 पेज लिखेंगे तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क मिलते हैं, 9 तो नहीं जाते और 8 तो पक्के देने पड़ते हैं. क्या लिखा वो बात अलग है. सो
What is the issue? Issue is our teaching system to complete the syllabus and examination system to check the memory based things. If we have the case based problem type examination, if we write the case, and I have many cases, we find many cases always, correct? Then that student has to attend the class, because what teacher speak is more important. तो अभी MOOCs काम नहीं करेगा, वीडियो काम नहीं करेगा, क्योंकि टीचर क्रिएट इट्स केस, ही गिव्स द एग्जांपल. जैसा फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में भी था, डायमीटर भी निकालना है तो टीचर का क्वेश्चन आता था मैथ्स में, एक ग्राउंड है, ग्राउंड का पेरीफेरी इतना है, ये इतना है, तो उसका डायमीटर कितना रहेगा, उसका रेडियस कितना रहेगा. तो बच्चों को दिमाग लगाना पड़ता है कि पेरीफेरी ग्राउंड की इतनी है, तो ये सर्कुलर है, तो उसका कैसा कैलकुलेशन करने का. और आप डायरेक्टली हम बात करेंगे डिफाइंड डायमीटर, डिफाइंड रेडियस, तो हमारी एग्जाम सिस्टम है वो डिफाइन करने के लिए बोलती है. सो इसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा. सो एज अ फार्मास्यूटिक्स पर्सन, करेक्ट, व्हाई एनी ड्रग इज कन्वर्ट इनटू डोसेज फॉर्म. तो मैं एग्जांपल हमेशा दे रहा हूँ पैरासिटामोल का. पैरासिटामोल की टैबलेट है, पैरासिटामोल का ड्रॉप है, पैरासिटामोल का सिरप है, पैरासिटामोल का सस्पेंशन है. एक ड्रग है उसका सस्पेंशन भी है और सिरप भी है, मोनोफेजिक भी है, बाइफेजिक भी है, और उसका इंजेक्शन भी है. सो व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू एन नंबर ऑफ सच डोसेज फॉर्म, ऐसा पूछना चाहिए. एंड व्हाई इट इज सिरप एंड सस्पेंशन, व्हाई सिरप इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू द इन्फेंट, व्हाई द डोज ऑफ ईच एंड एवरी लिक्विड इज 5 ml, इतना होना चाहिए. वो देखो क्वेश्चन आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यापीठ का पेपर छोड़ के कहा नहीं मिलेगा आपको. व्हाट वी हैव द क्वेश्चन, डिफाइंड सस्पेंशन, डिस्कस सस्पेंशन, राइट फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन. तो बच्चे को जाना पड़ता है, वो भी जो नोट्स है वो रट्टा मार लो और लिख दो. सो हैव यू क्रिएटेड अ केस, हैव यू गिवन द explanation for why 5 ml liquid, have you given explanation why same paracetamol is available as solution as well as suspension. And in the drops, 5 drops are 100 milligram per ml, 5 drops are 150 milligram per ml, 5 paracetamol is 125 milligram per 5 ml. कितनी तो बातें हैं, मगर as per me I not seen such a case. Case is not created, but directly questions are asked. Therefore, I have this slide. When I started delivering on the interactive teaching, I made this slide. So all the reasons are correct to convert drug into dosage form, to improve viability, to improve environmental stability, for ease of administration, for ease of manufacturing, to improve acceptance by patient and safety, convenient to handle a store. Can your student rank this? So which is the first answer, topmost answer, primary answer, and which are the secondary answers? We not create such questions. What we write, give different reasons to formulate different dosage forms. Blah 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 blah. 2 पेज लिखता बैठा, उसको टारगेट नहीं आता, क्योंकि ये लिखने का ना एबिलिटी है, ये है, वो है. But what is the first reason? So it should be interactive, but online is a problematic. But if anybody want to say anything, which is the first answer, you can say. कौन सा first answer है rank में? Okay, the answer is not correct. So what is the important in the teaching? The online is creating a question. Actually, online is a good system if people are attentive, if people have a camera on, but nowadays attendance is more important than the attention. Therefore, the best way of teaching is interactive teaching, which is the theme of NEP, and we are lacking that. Therefore, the teacher has to only give the answer. He has to create a questions, and nothing is digested because participant is not involved. The always participant should be involved. Again, the participants are not involved in this. So this is the list. And if we think on it, the list you will find it is more appropriate. The thinking is more important. And for the thinking, whether the critical thinking or creative thinking,
we should understand the thing, and for understanding the thing, it requires the proper teaching, learning process. Then and then innovations will be there. Then and then some product will be launched, and then industry will grow and our GDP will grow. Now, what is the problem? All are having the distinction, all are having the very high degrees, but they are not getting a job because they are not thinking. They want something, give me job, because I will not convert my education in the industry, in the product, but my education should lead to the salary. Actually, education system should lead to the product. And for that, the thinking and innovations are important. And therefore, the objective of NEP are first, toward the less content. सिलेबस है भाई, 75 आवर का सिलेबस है. It is not means that line and line of book should be read and delivered to the student. नहीं भाई, correct. So you have a conceptual teaching where teachers should teach the concept. It is called as the flip the classroom. Already announced that this chapter, this point will be discussed next time. Come with the reading. Provide them PPT, provide them the videos, and just have an interactive class, and you give the concept, correct. Hardly out of 1 hour, at least 15 to 20 minutes should be given for a discussion point, so that the things will be converted into the regular digestible material, and then the information will get converted into the knowledge. So what is the present trend is teach line and line like a providing information. We are not converting that information into knowledge. More toward the learning about how to think critically and solve the problems. Teaching hona chahiye more toward the critical thinking and problem solving. And for that, it should be multidisciplinary. सिर्फ फार्मेसी को लेके नहीं बैठना है. फार्मेसी में भी अंदर बहुत कुछ है, वो देखेंगे हम आगे जाके. सो मेक एजुकेशन मोर एक्सपेरिमेंटल. मगर लैब में जाके क्या होता है, पहला टीचर इंट्रोडक्शन देके बाहर निकलता है, वो साइन करने के लिए आता है, और बच्चे सिर्फ फिनिश करते कि भाई ये जर्नल में लिखने के लिए कुछ तो बनाओ. सो इट इज अ लेस एक्सपेरिमेंटल. होलिस्टिक तो नहीं है, होलिस्टिक कुछ नहीं है. कोग्निटिव में जो करते हैं वो सुटिक्स में नहीं करना भाई. टीचर ही बोलता है ये कोग्निटिव का पार्ट है, सुटिक्स में क्यों लेके आते. केमिस्ट्री का पार्ट है, इधर कोलॉजी में क्यों लेके आते. तो ऐसा होता है, हमारा इंटीग्रेशन नहीं है. और इन एडिशन टू दैट स्टूडेंट शुड बी क्रिएटिव. और क्रिएशन सिर्फ फार्मेसी में नहीं चाहिए उसका. whether the student have a basic arts, craft, humanities, games, languages को बहुत अभी वैल्यू आ रही है, because Britishers created such a system. They are strong because across the globe now English is dominated. It is due to the work done by that Britishers. But what they made our education, which is a recitation based, less thinking based, and made a perception like that इंग्लिश ही करना है भाई. इंग्लिश छोड़ के आप कुछ पढ़ेंगे तो आपका काम का कुछ नहीं. तो गांव में इंग्लिश स्कूल निकली है, बच्चा तो कुछ समझता नहीं, वो भी रिसेट मारता है. एबीसीडी बोला तो माँ बाप खुश होते हैं कि भाई देखो मेरा बेटा अभी बाळ तुझं नाव काय बोललं तर उत्तर देत नाही, बट व्हाट इज युअर गुड नेम बोला तो वो आंसर देता है. हाँ, तो बहुत बेटा बड़ा हो गया, अभी इंग्लिश में बोल रहा है. तो उसको पता चलता है बाद में कि वो अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं कर रहा है, रिसाइटेशन कर रहा है. और रिसाइटेशन करने से हमारा बहुत प्रॉब्लम हो गया. So now we are promoting the local languages also and expecting that in the next 10 years, all pharmacy books, engineering books will be in the Marathi, Hindi, Gujarati, Tamil, Kannada. And then the last student in the remote place, Wadi, Vasti, Gav, he can understand the science. So today we appreciate the student or a faculty or the any human being who have the very fluent English. English अच्छा होना अच्छा ही है. I'm not saying that, but really
only that language is the parameter to judge their understanding, quality, thinking है और language है, इसमें फर्क है. If he understand the concept, what language it may be, he can think better. Therefore, these changes are taken place in the education policy. If we see the very old policy, 1948 की policy और आज की policy, number of changes are taken place periodically, and nowadays we are thinking, means we are on the verge of implementation of this NEP 2020. What is the content of it is more important now. It is the holistic and multidisciplinary education. These two words are more important. Holistic and multidisciplinary. And can we have in the pharmacy or not? Now there is no alternative. We have to start. So from today, we have to think on it. Correct. How our university, my college, my university, my state, my country will get converted into this holistic and multidisciplinary approach. And where we expecting that more number of students will take higher education. We'll have a higher education institute, not as the colleges, which will be multidisciplinary. Students will have more technical skills, skill development, vocational subjects, soft skills, all this, it should be included. So these are the three main aims of the NEP, and we have to go one by one for understanding. Highest recommendation is to make it holistic and multidisciplinary. But if we see in our pharmacy itself, forget about the other disciplines, we have the very good separated COs in the higher education. वो जो एडवर्टाइज है ना इसकी फेविकॉल की दीवार, वो दीवार टूटती नहीं. इधर हर एक की दीवार है. आर्ट कॉमर्स की दीवार है, साइंस की दीवार है, इंजीनियरिंग की दीवार है, फार्मेसी की दीवार है. इधर का बेटा उधर नहीं दे सकता. हाँ, फार्मेसी को कंप्यूटर पढ़ना है तो हम बोलेंगे फार्मेसी किस लिए आया, फिर भाई कंप्यूटर ही जाने का था ना. अभी फार्मेसी का बेटा कुछ पोएम लिखता है तो हम बोलेंगे नहीं नहीं तो आर्ट में जाना था, मिसप्लेस हो गई तेरी बस फार्मेसी. तो फार्मेसी में आके सिर्फ क्या कर तू सिर्फ दवा 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 के बारे में पढ़. फार्मेसी में हम बोलेंगे, एक स्टैटिस्टिक्स वाला बोलता है केमिस्ट्री तो क्यों पढ़ रहा है, केमिस्ट्री वाला बोलेगा फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ रहा है, फार्माकोलॉजी बोलेगा नहीं नहीं वो तो कोग्नोसी क्यों पढ़ रहा है. तो वी मेड दिस सेपरेशंस. फार्मडे वाला बोलेगा, अभी भी चालू है, जो बीफार्म के कॉलेजेस है अभी मेरे पास एडमिशन के लिए आते हैं लोग, तो कॉन्फिडेंटली वो बेटा बाप आता है तो बोलता है नहीं नहीं सर हम ये कॉलेज में गए थे और वहां का टीचर बोला कि डोंट टेक एडमिशन टू द फार्मडी, फार्मडी इज फॉर अमेरिका, आपको अमेरिका जाना है. अरे भाई देखो अभी फार्मडी के भी बच्चे बहुत आगे गए हैं. 40,000 से लेके 22 लाख तक सैलरी पर एनम थी कहीं हमारे एक स्टूडेंट को मिलती है. तो सब जगह चेंज है पर हमें मालूम नहीं. वी आर सेपरेटिंग छोटा छोटा पैकेट्स करो. पॉलिटिक्स में भी वही चला है, पॉकेट्स करो, डिवाइड करो, रूल करो. अभी पॉलिटिक्स भी चेंज होना चाहिए और एजुकेशन भी चेंज होना चाहिए, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी जाना चाहिए. मगर हमें आनंद मिलता है और इजी जाता है इफ वी डिवाइड एंड रूल. ये तो बंद होना चाहिए, तो ही हमारा ग्रोथ होगा, तो ही थिंकिंग होगा. हमारे स्टूडेंट को कुछ थिंकिंग करना है तो व्हाई नॉट म्यूजिक एंड केमिस्ट्री गो पैरेलल. एक मुझे ईपीआई बनाना है, अच्छा सा ईपीआई बनाना है, इंडिया में ईपीआई कम बनते हैं, तो उसको इंजीनियरिंग का भी नॉलेज चाहिए, ड्रग डिजाइन की भी नॉलेज चाहिए, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी फ्रॉम मेडिकल चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज चाहिए, रस द्रव्य फ्रॉम आयुर्वेदा चाहिए, यूनानी से चाहिए. मीन्स इफ दैट पर्सन इज परफेक्ट विद द नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, क्यों फार्मेसी छोड़ के भी उसको चाहिए, तो he can launch very good API. So therefore, if we see today, also we have the health university different, technical university different. Means technical को कुछ health में काम करना है तो नहीं भाई तू इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग में काम कर. तो तुझे डिवाइस भी बनाना है तो देखो अभी कल एडवर्टाइज आ गई है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की. उनको डिवाइस के लिए कौन चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए और फार्मासिस्ट चाहिए. तो इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी कंसेप्ट है, मगर हमने ही डिवाइड कर दिया था उसको.
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डिफरेंट, मीन्स एग्रीकल्चर में प्रोटीन के कौन से अनाज बनते हैं, कौन से क्रॉप्स है वो नहीं मुझे हमें मालूम, वहाँ कहाँ इम्यूनो बूस्टर्स है वो नहीं मालूम, तो ये हम so हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज सेपरेटेड. नाउ व्हाई नॉट अ सिंगल यूनिवर्सिटी, और ये बनने वाली है और आगे जाके हमें पता चलेगा. वी विल बी अ यूनिवर्सिटी, each and every component will be autonomous. So this slide is more important. Now there will not be Pune University, Mumbai University, Solapur University, Kolhapur University, and you are part of that. Your institute will be autonomous. With next 10 years, each and every institute will be autonomous. Either it is an autonomous degree granting college, autonomous college, EC, it is autonomous degree, which is a multidisciplinary institute that is granted institute. It is for a undergraduate degrees, but आपकी भी autonomous रहेगी. पूना यूनिवर्सिटी, सोलापुर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी का लेबल नहीं रहेगा. If we have a track, very good track record of giving a good degree, that is autonomous accredited by NEP, again NEP will come. There is less guarantee that NBA and all these different components will be there, only NEP will be there. Then that college can be transferred or converted into the teaching intensive university, जहाँ थोड़ा टीचिंग ज्यादा है और रिसर्च कम है. और फाइनली रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी, रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी जहां रिसर्च टीचिंग से ज्यादा है. सो दिस इज द लाइन. सो ईच एंड एवरी कॉलेज will be a multidisciplinary unit which is autonomous. Forget about the degrees. जो अभी डीन है, लास्ट डीन है, पुणे यूनिवर्सिटी का डीन है या कौन सा भी डीन है, और डीन को जाने के नहीं जाना पड़ेगा. कई दिन के बाद आपका खुद का डीन होगा, आपका खुद का प्रिंसिपल होगा, खुद की आपकी यूनिवर्सिटी होगी, खुद को सर्टिफिकेट देना है, खुद को सिलेबस करना है, आगे जाके देखेंगे. एंड ऑल्सो होपिंग दैट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नंबर विल बी वेरी हाई in the country, and they are promoting the collaboration with the good universities also. So what is the first thing? Have a cluster, working in the cluster. Start with your department. Coology department should work with the cognitive department, should work with the chemistry department, should work with the static department. Don't divide our college in the department, first line. This is the first thing. Then work with the other colleges nearby you. आर्ट कॉमर्स होगा तो भी चलेगा. देखो मैंने लिखा है केमिस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग केमिस्ट्री, हर्बल केमिस्ट्री should work together. Then they will extend their working with the performing art, management college, social science college, art college. What colleges nearby their campus, they should start working. Today only you start working, make a cluster, make a one appointment, find your academic partners from different disciplines. If they are not accredited, even a diploma pharmacy, in why I'm marking this intentionally, because degree colleges are accredited by NAC NBA, but many diploma colleges are not accredited by NAC NBA or anything. Then it will be difficult to get their autonomous college as a permission. They should have a accreditation concept at their place only, and they should start working together, because the cluster is important nowadays in the NEP. Correct. So we have the fragmented part. We have the general education like art, commerce, science. We have the technical university education, engineering, pharmacy, management, likewise architecture, health, allopathic, ayurvedic, nursing, Unani, vocational and liberal arts. So we here separated each and every component, but now expecting that all will work together. And the pharmacy is the base for that. If we understand ourselves, so I can say the pharmacy is the first discipline which is the multidisciplinary. Have the pharma technology, drug synthesis, formulation development, production, instrumentation as a science part. We have the practice part, clinical research, community pharmacy, hospital pharmacy, drug information centers. We have the allied part, marketing, regulation, IPR, QA, NABH, NABL.
all this is there, but unfortunately now we have the less flexibility. What syllabus we have to teach without modification. So it is decided at a central place, and there is very less scope given to the universities. स्पीकिंग लोग बोलते हैं नहीं आप ऐड करो, अरे भाई कितना ऐड करेंगे, आपने तो पहला 100 तो 110% पूरा पैक किया है. If we add something, then it becomes overloaded syllabus. Why not you are giving us some flexibility? PCI and AICT should give a core subjects, and additional subjects should be there from university to university. And in the university, we should give the core subjects to the students, and they should go for a additional subjects. Correct. This system should be there, but is unfortunately there is a less flexibility, and we hope the positive change in the near future, that our syllabus should not remain very rigid at international level, but it should be a flexible. It definitely guidelines should be there. So therefore, there is one point what syllabus should be there, and second point more important, as the Venkat sir told, correct. So there are multiple entries and multiple exit. This is the very new trend, new expectation, correct. The student can join in the pharmacy. He will take few subjects, core subject of pharmacy, and he will take other subjects. Like from engineering, he will take computer. From arts, he will take a music, no problem. From management, he can take a HR likewise, correct. So core subject and a secondary subject he can take, and he can be at your college for only 1 year out of 4 years, only 1 year. So we should have a syllabus which is sufficient to give a certificate course, and he should get some job on that, correct. तो अभी क्या करते हैं हम सब बेसिक चैप्टर अभी फर्स्ट ईयर में लगाते, बीफार्म में जो कवर 12th में कवर करते हैं उसका एक्सटेंशन हमारा बीफार्म फर्स्ट ईयर में रहता है. So where we have to teach something related to the pharmacy also, because the chance may be that after first year the student may leave the education or may go to the other colleges also. So we should give a 1 year certificate, 2 year diploma. In simple way I can say, डिग्री कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेगा, 2 साल पढ़ेगा, तो उसको डिप्लोमा इन फार्मेसी का एजुकेशन हमने देना चाहिए. So he can have a minimum qualification diploma pharmacy by completing 2 years of a BPharm. He will become a diploma pharmacy. तो डिप्लोमा कॉलेज में जो सिलेबस है और डिग्री कॉलेज में जो सिलेबस है फर्स्ट 2 साल में वो सिमिलर ही होना चाहिए. So our student who are aiming to become a graduate, but many situations are there, he want to discontinue after 2 years also, but he should able to have a some diploma course like a syllabus, and he can get a job. Bachelor's 3 years, अभी 3 year का जो BSc वाला है वैसा हमारा भी 3 years का रहेगा, where there is no much research component, and if we add a research component he should become 4 years degree with research. ये एक्सपेक्टेशन है हमें जाना पड़ेगा इस पर कि हमारा फार्मेसी का सिलेबस कैसा होगा कि he will that student will get a sufficient knowledge in each level. एग्जिट ज्यादा है, एंट्री ज्यादा है. 2 साल होने के बाद भारती में पढ़ा, तीसरे साल वो दूसरी कॉलेज में जा सकता है, क्योंकि उसका अभी मार्कलिस्ट नहीं है, क्रेडिट सिस्टम है जो सेंट्रलाइज प्लेस है, वो आगे देखेंगे. और हमें डिग्री करना है, डिग्री में भी 1 year or 2 year. The student who completed 4 year of their degree will complete a PG in 1 year. The student who did a 3 years of degree, the PG will be of 2 years. Who bachelor degree will convert into master degree in 1 or 2 years. So what is important for me is the understanding of a concept. ये concept था और understanding how will teach. So one day I got this Marathi का एक social media पे मिला था, and I found it is very useful for me for teaching everything. So considering many of they may be from Marathi में नहीं तो मैं हिंदी में बोलूंगा. एक 4th स्टैंडर्ड का लड़का रहेगा, 3री या 4थी स्टँडर्ड का, और टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा था, तुम्हाला आवडलेले कोणत्याही स्थळाचे वर्णन करा. So write on the one
place, location, स्थळ. So the स्थळ and student written, आमच्याकडे एक स्थळ आले होते, खूप चांगले स्थळ होते. What is the meaning of this? Meaning of this, स्थळ means a location or tourist spot, or स्थळ in a Marathi is called as the rishta, that is marriage proposal. So here that kid written very nice on the marriage proposal. What is the party? What was the education? What was the salary? Whether the was a good marriage proposal or not, likewise he written very nicely. But the teacher ने देखो wrong कर दिया और 0 marks दे दिए. तो मेरा क्वेश्चन यही है कि what student written, how we can say it is wrong. टीचर ने एक पिकनिक स्पॉट के बारे में, टूरिस्ट स्पॉट में पढ़ा रहेगा क्लास में, बट दैट इज नॉट रिटन बाय दैट स्मॉल किड. उसने जो लिखा है वो घर में खेलते खेलते समय ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जो बोलती थी वो इनडायरेक्टली सुन के उस पर थिंकिंग करके ही रिटन वेरी वेल. तो स्टूडेंट डंप है, स्टूडेंट को कुछ आता नहीं है. So point is that student is a clever intellectual, he have very good thinking ability, but what is the system? System is that what is asked by teacher, it is not written. तो आज तक कितना प्रॉब्लम है कि बच्चा खुद के लैंग्वेज में लिखता है तो हम 0 मार्क्स देते हैं उसको. हम क्या बोलते हैं, बुक में जो लिखा है वो लिख भाई. तो 3D में जाते हैं हम. 3D में मशीन की जो भी डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन, वो बोलने के बाद हमें मार्क्स मिलते हैं, और रैंचो जो डेफिनेशन बोलता है उसको मार्क्स नहीं मिलते. सो दिस इज द फेल्यूर. क्वेश्चन आस्क्ड वाज ऑन द शनिवार वाड़ा, बट स्टूडेंट रिटन very good thing about the marriage proposal, but he got failed. So therefore, can we have a logical thinking type conditions, and can we judge the student on his thinking ability? But our system is restricted to the syllabus, discuss, define and classify system, boundaries, physics की boundary, chemistry की boundary, pharmacy की boundary, engineering की boundary, and we are thinking that our students will think better and they will develop something. Therefore, NEP is promoting system to give freedom to design your own syllabus. तो नगर का कॉलेज रहेगा, कई छोटे प्लेस का कॉलेज रहेगा, या बड़े सिटी का कॉलेज रहेगा, तालुका प्लेस का कॉलेज रहेगा. It is an independent unit, autonomous independent unit. Pisar Vandana Dilip, it is the 4th or 5th time you are having a problem. If you're not interested, better you leave. The certificate will be there, because whole education nowadays is to provide the certificates, degree certificate, master certificate. So you should be a part of this, or leave it. You will get a certificate of attendance, no issue. Correct. You have a freedom, and NEP given a freedom to design your own syllabus. तो freedom है तो हमारे पास point आ जाएगा कि do we have a such a faculty, या हमारे पास फैकल्टी है वो सिर्फ हमने 10-10 हजार देके PCI की रिक्वायरमेंट भरने के लिए रखी है. हर साल वो छोड़ के जाती है, नहीं आती है. इफ छोड़ के जाती है, नहीं आती है, तो who will make the syllabus, who will run the university? ये भी बात है, समझने की बात है. तो इसलिए we'll go slowly by understanding what are the problem in the implementation of system. Are we able to design our own syllabus and to run that own syllabus? अभी तो पुणे यूनिवर्सिटी बनाती थी, कोल्हापुर यूनिवर्सिटी बनाती थी, मुंबई यूनिवर्सिटी बनाती थी, 4 लोग बनाते थे और 10 लोग उसको इंप्लीमेंट करते थे. अभी आपको खुद को आपकी ओन आइडेंटिटी रखनी है. So what is your intellectual capacity, experiential capacity, qualification capacity at your own place? This is more concern for me than who is designing a syllabus. So जनरल एजुकेशन काउंसिल रहेगा, इट विल गिव अ गाइडलाइन. भाई फार्मेसी में इतने इतने चैप्टर ऐसे ऐसे होने चाहिए, इतना कोर सब्जेक्ट होने चाहिए, इतने एडिशनल सब्जेक्ट होने चाहिए, ऐसा वो बोलेगा. सिलेबस तो हमें डिजाइन करना है. We have to add more skill development through the vocational education.
तो आईआईटी वाले आपके बाजू में है, तो देखो आईआईटी वाले नहीं तो आईटीआई वाले, आईआईटी तो बहुत बड़ी हो गई, आईटीआई वाला भी काम आ जाएगा हमारे यहाँ। इंजीनियरिंग का वर्कशॉप है तो हमारा काम में आ जाएगा। केमिस्ट्री की अच्छी लैब बाजू में है तो हमारे काम आ जाएगी, क्योंकि हमारा फार्मेसी का केमिस्ट्री वाला जो पढ़ता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पढ़ता है वो साथ साथ पढ़ेंगे तो कितना चेंज होगा देखो। तो वोकेशनल कोर्सेज चाहिए और क्लस्टर चाहिए। वोकेशनल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग विद द एनजीओ। आज एनजीओ बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, कैन वी पार्टिसिपेट विद द एनजीओज? तो ये भी है। क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम चाहिए। अभी चालू हो गया है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम, मगर वो भी मार्क्स हम देते हैं बहुत सारे और वो चलता है, ठीक है। इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाना चाहिए हमें, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग। प्रोफिशिएंसी इन द इंडियन लैंग्वेजेस चाहिए, एग्जाम भी इंडियन लैंग्वेज में हो भी सकती है। फैकल्टी, टीचिंग ड्यूटीज विल बी नॉट एक्सेसिव। वर्कलोड 18 20 20 30 30 वर्कलोड नहीं भाई, वो थिंकिंग कब करेगा, वो एक्सपेरिमेंटेशन कब करेगा? सो फर्स्ट वी शुड हैव अ 15:1 रेशियो। पक्का है तो अच्छा है, दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअली चाहिए तो टाइम मिलेगा थिंकिंग के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी फैकल्टी। देखो स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दी है, he can learn in your institute for 1 year, he can leave your institute and go to better institute in second year। मगर टीचर तो फुल टाइम चाहिए खुद के इंस्टीट्यूट में। और क्या लिखा है, he should feel committed to that institute। अच्छी बात है भाई कि मैं भारती में हूं तो मैं साल भर दिन लाइफ, मेरा लाइफ लॉन्ग मैं इधर भी रह सकता हूं, है फैसिलिटी तो रहूंगा मैं। अभी यहाँ टीचर चेंज नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन है, मगर स्टूडेंट चेंज होगा। तो आपको ये देखना है कि मेरे 60 की जो स्ट्रेंथ है 60 की बीफार्म की, वो 60 की स्ट्रेंथ हमेशा रहेगी क्या नहीं रहेगी? अभी तो बेटा आता था, लड़का आता था 4 साल के लिए एडमिशन लेता था, गारंटी क्या है कि नेक्स्ट ईयर वो आपके यहाँ रुकेगा, आपके यहाँ देखेगा कि टीचर परमानेंट नहीं है, सब टीचर जूनियर है, उनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है। आइसोलेटेड फार्मेसी का कॉलेज है, बाजू में आर्ट कॉलेज भी नहीं है, बाजू में इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है, कुछ अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ता तो दूसरे कॉलेज जा सकता है। तो क्या गारंटी कि नेक्स्ट ईयर आपकी कैपेसिटी 60 रहेगी, 30 रहेगी तो कई लोगों को निकालना पड़ेगा। तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है टू रिटेन द स्टूडेंट्स इन योर यूनिवर्सिटी। अभी आप उसका मार्क लिस्ट भी देना पड़ेगा, उसको कभी भी चेंज हो रहा है, सेकंड ईयर में छोड़ के जाना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा और आगे भी आएगा। आपकी फीस भी फ्लेक्सिबल चाहिए, कैसी वो भी हम बता देंगे। तो आगे क्या होता है देखो, स्टूडेंट इज अ फोकस, स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दी है, मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट स्टूडेंट को दिया है। सिलेक्ट पर्टिकुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बेस्ड ऑन देयर डिसिप्लिन। वो आज इधर है वहां दूसरी जगह जा सकता है, इतना फ्रीडम दिया है। क्रेडिट बैंक सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड। एप्लीकेशन किया तो आपकी मार्क्स भारतीय विद्यापीठ से लेके पुणे विद्यापीठ में ट्रांसफर हो जाएंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो जाएंगे, भोपाल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट बोलता है मुझे अभी यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है। यू कैनॉट रिस्ट्रिक्ट दैट। So these are the important things. Therefore, more pressure on the administrative management and the faculty to retain the students who are admitted in a college. They should retain there for next 5 years. तो आपका जॉब सेट हो जाएगा, नहीं तो गारंटी नहीं है। ये समझ के बात ले लो। देखो फाइनेंस में मैटर कैसा करेगा, अभी आपकी फी है, अभी कॉम्पिटिटिव बनेगा। आइडिया अच्छा है, वोडाफोन अच्छा है, एयरटेल अच्छा है, या हमारा रेगुलर वाला गवर्नमेंट का फोन अच्छा है, अभी हम डिसाइड कर सकते। बच्चा भी डिसाइड करेगा भाई कॉलेज की फी कौन सी कम ज्यादा है, मैं इस साल यहाँ रहूंगा दूसरे साल उधर जाऊंगा, उसकी फी कम है, टीचर ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उधर स्पोर्ट्स को ज्यादा मुझे चांस मिलता है, मुझे स्पोर्ट्स करना है। नहीं नहीं नहीं, ये कॉलेज में तो डांस का भी कॉलेज है,
मैं फार्मेसी पढ़ते पढ़ते डांस भी करूंगा, नहीं नहीं मुझे म्यूजिक भी आता है, उधर मेरी पैशन म्यूजिक की है, मैं म्यूजिक भी सीखूंगा। तो आपके यहाँ है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। और इफ वी सेट द फीस ऑफ अ प्रोग्राम, वो बार बार चेंज नहीं होगी, पूरी साल एक स्ट्रीम में वो ऐसी जाएगी, वैसा लिखा है। नो आर्बिट्ररी इंक्रीज इन द फीस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनरोलमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बातें एडमिनिस्ट्रेशन की है। एंड व्हाई इट इज, बिकॉज मोर फ्रीडम इज गिवन टू द स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास एनबीए है, कैसा होता है, बहुत से यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड है, तो पहला पॉइंट है कि देयर विल नॉट बी एनी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, आपकी खुद की यूनिवर्सिटी होगी ऐसा समझो। दूसरी पीसीआई आती है, पहले आती है हमारी लोकल मैनेजमेंट कमेटी आती है यूनिवर्सिटी से, वो चेक करके जाती है, या डिप्लोमा है तो एमएसबीटी के लोग आते हैं चेक करके जाते हैं। बाद में पीसीआई आता है, एआईसीटी आता है, एनबीए है, नैक है, बहुत सारा है। अभी वो सिस्टमेटिक किया है। देयर आर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमएचआरडी था, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया, उसके अंडर एचईसीआई बनेगा, वो बना ही है, बनेगा नहीं, बना है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अंडर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक ही है, नैक पूरा सब देखेगा। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, पूरे ग्रांट आपको यहाँ से मिलेगी। जनरल एजुकेशन काउंसिल वो सिलेबस करेगा। सो दीज आर द डिफरेंट वर्टिकल्स एंड देयर रोल। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल विल रेगुलेट ऑल द वर्किंग इन लाइट बट टाइट मोड, ऐसा वर्ड यूज किया है। आपको फ्रीडम दे देंगे, बट each and everything on the website, each and everything will be transparent and it should exist. NEC है, वो सब अभी एक्रेडिटेशन करेगा, everybody should have a accreditation. हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप देगा, और जीईसी सिलेबस बनेगा, और रिसर्च के लिए अलग जो हमारा काउंसिल रहेगा, वो सिर्फ रिसर्च के लिए फंडिंग करेगा। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पीसीए और एआईसीटीई? The PCA and AICTE will not be regulatory body, ऐसा लिखा है। The professional councils like AICTE, PCI will act as the professional standard setting bodies, or these will be a member of GEC. GEC जो सिलेबस बनाती है उनके मेंबरशिप रहेगी, and they will not be a regulatory role. तो उनका इंस्पेक्शन होगा ऐसा नहीं है, उनका सिलेबस होगा ऐसा नहीं है, सिलेबस जीईसी बनाएगा, और हमारे लोग as a PCI member, as a PCI component, will suggest the framework from them and see the professional standard. तो PCI को देखना है कि हमारा स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वैसे हिसाब से हम हमारी बात GEC को दे देंगे, और GEC फिर सिलेबस बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, he will fund all the research component. अभी फंडिंग के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, it is a centralized thing which will fund the research. So every institute have its own board of governance. Every institute should be autonomous. Every institute should have its institutional development plan for 5 years, 10 years and 15 years. मुझे आगे कैसा जाना है, what should be my strategy of education, research, promotion, growth, ये सब मुझे करना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए। सो कम्युनिटी लर्निंग के लिए बहुत काम है। आज एनएसएस कैंप रहता है हमारा, सिर्फ एक वीक का हम कैंप लगाते नहीं भाई, आपको अभी फील्ड में जाना पड़ेगा, अलोंग विद द फील्ड, अलोंग विद द एनजीओ, आपके स्टूडेंट को एडिशनल नॉलेज देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। देयरफॉर मेजर रिफॉर्म्स डन इन द एजुकेशन रेगुलेशन आर, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च प्रमोट करेगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हमें ग्लोबली इंडिया को प्रमोट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन टुगेदर, जोन वाइज काम करेंगे हम, जोन वाइज, जहां कम ज्यादा है एजुकेशन वहां गवर्नमेंट कॉलेज निकलेगा, प्रमोट करेगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा, एमएचआरडी का एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री बन गई है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये अभी एक सेंटर बनाएगी which is a model for a understanding how to implement this new education policy. So what are the challenges? Challenges are many challenges, but we have to take all this as a positive. For that, first what is in our hand is start teaching in interdisciplinary manner.
start designing a paper which is not promote the recitation mugging, but it should promote the thinking. Start working with the others, other colleges, other departments in our college or other colleges in our university. Make a group cluster, start working, because nowadays all will change. If the change is for progress, change is for development, change is for thinking, change is for industrial development, not only to provide degree certificates and register. So in this way, I am always with you in a different way. If you have any question, any discussion, it is open for you. Thank you. Participants, if you are having any question, please unmute and ask. Participants who are not asking the question, please mute. And participants who are going to ask the question, please unmute. हॅलो. हा, नमस्कार सर. नमस्कार. सर खूप सुंदर सांगितलं तुम्ही हे नवीन एज्युकेशन पॉलिसी बद्दल आणि पर्टिक्युलरली फार्मसी बद्दल खूप चांगलं वाटलं. दुसरं असं विचारत होतं की ह्याच्यात एक अशी शंका होती की असं तर नाही होऊ शकत त्याच्यात किंवा एक ना धड भाराभर चिंध्यावाला कार्यक्रम होऊन जाईल. नाही, होणार नाहीये. आता फक्त आपल्याकडं व्हॉट इज द थिंग इज दॅट चेंज इज ऑलवेज बर्डन फॉर अस, बट वी हॅव टू चेंज. Therefore 20 years are given, complete 20 years. Actually, due to the corona, it is implementation is slow. Otherwise 2021 was last year was the first year of the implementation. Nowadays it is started in a some but very slow manner. Up to these 10 years, for this decade, up to 2030, each and every institute should get converted into autonomous institute. It is the first 10 years job, and next decade is just to implementation and see outcome. Correct. The first thing, it is not new to the globe. If we see in America, even any person can be PhD in any other discipline if he appears for the coursework. So in India also we accepted that coursework concept, but for admission in the PhD, what we do, सुटिक्स में एमफार्म है ना, तो तुझे सुटिक्स में पीएचडी करनी पड़ी. अरे भाई वो सुटिक्स में एमफार्म है, बट नाउडेज ही इज इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, अलाउ हिम. नहीं, हम ही बोलते नहीं, तूने गलती की लाइफ में, तूने एमफार्म केमिस्ट्री में किया ना, अभी तुझे सुटिक्स में आना नहीं पड़ेगा केमिस्ट्री में लाइफ करने का. व्हाई? गिव हिम अ कोर्स वर्क फॉर 2 years, he will read, he will give the examination, and if he is able to handle the sutics component, let them allow. मगर हमारा मन ही बोलता है, बिकॉज वी मेड द कंपार्टमेंट्स ऑलवेज. सो वी हैव टू चेंज दैट. क्यों नहीं भाई, सुटिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, उसके साथ मुझे डांस भी करना है, ठीक है ना. डांस करके मैं ऐसा बोलूंगा कि म्यूजिक, हाउ इट इज हेल्पिंग इन द क्यूर ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग्स. क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे. डांस का मुझे नॉलेज नहीं, म्यूजिक का नॉलेज नहीं है, अभी मैं म्यूजिक पढ़ूंगा तो आई विल वर्क इन द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. मगर अभी हमारे यहाँ सिलेबस में कहा म्यूजिक भी नहीं. कौन म्यूजिक करेगा? गैदरिंग के टाइम पर बोलते बहुत शाना बन गया तू, डांस ही करेगा, तू केमिस्ट्री कब पढ़ेगा, तेरा स्ट्रक्चर तो अच्छा नहीं है. तो ये सब निकल जाएगा. इफ वी हैव द पॉजिटिव एंगल, डेफिनेटली इट विल टेक अ टाइम, स्लोली जाना पड़ेगा, क्योंकि आवर मेंटेलिटी, फर्स्ट वी हैव टू चेंज आवर मेंटेलिटी. सो नाउडेज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज जस्ट टू थिंक in a positive way. What are the possible things possible, which are the obstacles, which are the limitations, and how to overcome. तो पूरी इंडिया अभी इसके पीछे पड़ी है. जो भी होगा अच्छा होगा, नहीं तो हमने क्लर्क बहुत पैदा किए हैं अभी तक रिसाइटेशन करके. अभी हमें थिंकर्स चाहिए, and we should give the flexibility and we should give the knowledge, holistic knowledge. तो आपका पॉइंट बराबर है, कंफ्यूजन तो है, मगर उसको यानी कैसा है कि अभी वो कुछ एक साल सपोज सुटिक्स पढ़ ले रहा है, कोई सब्जेक्ट पढ़ ले रहा है, तो उसको उस एक साल में तो नॉलेज नहीं आएगा. नहीं, कोर सब्जेक्ट देखो, कोर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगी. ये ऐसा नहीं कि एक साल सुटिक्स पढ़ेगा दूसरे दिन केमिस्ट्री पढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा. उसको तो कोर सब्जेक्ट लेने हैं. मगर ये भी बात है ना
कि हमारा अभी कैसा हो रहा है कि एक साल सुटिक्स पढ़ेगा, अभी सुटिक्स पढ़ते समय वो सुटिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, कोलॉजी पढ़ेगा, उसको फायदा होता है कि भाई सुटिक्स है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, केमिस्ट्री मुझे स्ट्रक्चर नहीं जमेगा, मैं कोलॉजी के और 2 सब्जेक्ट लेता हूँ और स्लोली आई विल केमिस्ट्री बंद करूंगा। तो एक साल में इतना चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोर सब्जेक्ट तो कोर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पूरा फार्मेसी का आदमी पूरा इंजीनियरिंग भर के बाहर पढ़ेगा, नहीं होगा। उसको कोर सब्जेक्ट जो है वो कोर सब्जेक्ट लेके उसको आगे जाना है, मगर ही कैन शिफ्ट स्लोली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अदर सब्जेक्ट। और जैसा भी हमारा अभी फार्मेसी में नहीं है, अभी बीएससी में क्या होता है, 11th के बाद बीएससी जो भी बनेगा तो लास्टली अभी वो स्पेशलाइजेशन बनता है। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट एक टाइप के लेते हैं। अभी हमने रिजिड कर दिया है कि फर्स्ट ईयर आके फर्स्ट ईयर में बोलना है कि तुझे क्या होना है। भाई फर्स्ट ईयर में मत बोलो कि स्लोली ही कैन लीव सम सब्जेक्ट, ही कैन हैव मोर सब्जेक्ट्स एंड ही विल गेट मास्टर। तो जो अननेसेसरी है उसको पता चलता है अंदर जाके। अभी मुझे तो बच्चा पैदा होता है तब ही 3 में बोला है कि बच्ची होगी तो डॉक्टर होगी, अरे बच्चा होता है इंजीनियरिंग होगा। कब? एट द टाइम ऑफ बर्थ। अभी लाइफ जाने दो ना, उसको सीखने दो, उसको क्या पसंद है। तो हम जो अभी पहले दिन ही टैग लगाते हैं एडमिशन के टाइम, वो टैग नहीं रहेगा। ही विल डिसाइड हिज होल लाइफ ऑन हिज ओन डिमांड्स एंड कैपेसिटी। इतना इंपॉर्टेंट है। May I ask a question, sir? Yes, yes, yes. Sir, myself Amol Borade from Kokang Unpaid Rahul Dharkal College of Pharmacy, sir. Sir, actually a very good guidance given by respected Pawar sir. We have referred his book during our college days only. So straight away I am going to my question without wasting time. Sir, as you told that freedom to the student is going to be given. Yes. My question is that case-based study, you can say practical-based. If hello, am I audible? Hello, hello, hello. हाँ बोलो. Hello. Yes, yes. Hello. Audible, audible. Am I audible? Yes, yes. Hello. You are audible, sir. Hello. You are audible, sir. Hello. Am I audible? Yeah, there may be Hello. some speaker problem Yes, from sir. your end. Yes, sir. Yes, sir. I'm going ahead. So, sir, my question is that if we are having 60 capacity of students in a class, and according to NEP 2020, if every student is desiring to learn some another disciplinary subjects, say for example music, fine art, everything. So what will be the question? The 60 different subjects as an optional subject needed to be taught by a college. Means when we say the number 60 additional subjects plus our core subject. So how management will handle the to accommodate the capacity of the teachers in such scenario? I think I Yes, yes, yes. am, Answer is there. Answer yeah, is. yeah. Now, what is Okay, the thank you, system? sir. Yeah, what is system today? One principal is there. 20, 30 faculty members are there, and we are running our one unit. But if I have nearby art college, nearby engineering college, then there will be a centralized system. Correct? Because definitely there are core subjects and secondary subjects. For core subjects, students are teaching pharmacy. They will teach a pharmacy to the engineering person also. Some engineering people will come to your college. He is admitted in engineering for a core subject in the engineering, but he want only one subject from pharmacy. He will come to your place, and your student will go to their place. Means now university structure will run. We should have a software, proper software. We should see that this student, every college will have the core subject in the morning and secondary subjects in the afternoon. तो यहाँ का स्टूडेंट वहां जाएगा, वहां का स्टूडेंट। एंड देखो हम तो 60 कैपेसिटी 60 के ऊपर नहीं लेंगे, तो जो भी 60 हमारा मेरिट से आ जाएंगे उनको ले लेंगे। और हमारे स्टूडेंट 60 है, उसमें 40 स्टूडेंट हमारे कॉलेज के रहेंगे फार्मेसी के, मगर 20 स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाले रहेंगे या दूसरे भी कौन भी रहेगा, मैनेजमेंट वाला रहेगा। मैनेजमेंट जो कर रहा है, आज मैनेजमेंट को करना है, वो जो फार्मा मैनेजमेंट बोलता है तो 10 लाख की फी 15 लाख बनती है।
अभी 10 लाख फी में हमारे बाजू में मैनेजमेंट कॉलेज है, वो मैनेजमेंट का लड़का फार्मेसी में आके बैठेगा ना, और वो फार्मा मैनेजमेंट बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा? फार्मा का नॉलेज हम देंगे, मैनेजमेंट का नॉलेज वो देंगे। अभी फार्मेसी का लड़का मैनेजमेंट जाके बैठेगा और वो बोलेगा कि भाई मुझे तो रिसर्च में नहीं जाना है, मुझे बीफार्म कंपनी में जाना है, मगर मैनेजर बन के जाना है, तो ही विल टेक अ कोर सब्जेक्ट फ्रॉम अ फार्मेसी एंड एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। मगर अभी वो सिलेबस टाइम टेबल सेट करने के लिए आपका प्रिंसिपल और वो प्रिंसिपल का काम का नहीं है। माई कैंपस, दोज हु सीन, सपोज भारतीय विद्यापीठ का एरंडवनी कैंपस है, मेरे पास इंजीनियरिंग है, सोशल है, आर्ट कॉमर्स है, और परफॉर्मेंस आर्ट और फार्मेसी है, तो मैं एक बॉडी करूंगा और वो बॉडी दे विल लुक आफ्टर द ऑल दिस अरेंजमेंट्स। जैसा आपका जो भी कौन स्टूडेंट पार्टनर फॉरेन में काम करता है, देखो हाँ तो ये पॉसिबल है। ओनली थिंग इज दैट आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी मोर एज अ यूनिट, एज अ क्लस्टर, नॉट एज इंडिविजुअल। सर नमस्कार. हाँ बोला. हा सर, कुलदीप रामटेके बोलतोय. थँक्यू सर. सर, जसं आपण आता सांगितलं की 2 वर्ष जर डिग्री केलं तर त्याला डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपण प्रोव्हाइड करू शकतो जर तो मध्येच करायला पाहिजे असा विचार आहे आपला. येस, पण सर याच्यामध्ये डिप्लोमा आणि डिग्री याच्यामध्ये जो 2 वर्षाचा डिप्लोमाचा कोर्स आहे तो अॅन्युअल पॅटर्न मध्ये, आपण डिग्री जे चालवतो तो सेमिस्टर बदलायला पाहिजे ना, म्हणून सांगितलं एव्हरी इन्स्टिट्यूट विल बिकम ऑटोनॉमस. त्याच्या गाईडलाईन येतील ना. आता आपल्या लोकांनी फार्मसी काउन्सिलनं जीएससी ला रिकमेंड करायला पाहिजे की मला हे 4 वर्षाचा कोर्स रन करायचा आहे, सर्टिफिकेट द्यायचा आहे, डिग्री द्यायचा आहे, 3 वर्षाची डिग्री द्यायची, 4 वर्षाची डिग्री द्यायची आहे. तर माझा डिप्लोमाचा मुलगा पण माझ्या 3rd इयरला डायरेक्ट यायला पाहिजे ना. इथे सेकंड इयरला येतोय तसं नाहीये. जर का मग ते डिप्लोमा इन्स्टिट्यूट आहे, म्हणजे माझ्याकडे काय झालं, समजा तुमचं इन्स्टिट्यूट तशीच ठेवायचे असेल तर तो डिप्लोमा तिथे केल्यानंतर ही शुड बी एबल टू कम इन युअर कॉलेज ॲट 3rd इयर टू कम्प्लीट हिज डिग्री कोर्स. At the same time, the students of my college who are admitted for 4 years, but after 2nd year he can think, I have to open medical store now and I will go. Okay, means we have to think, our seniors, our apex body members have to think that how, this is my opinion in the regulation how fitting. आणि असं करायलाच पाहिजे ना, तर माझी सिस्टम राहील, नाहीतर माझं डिप्लोमा कॉलेज बंद पडेल. येस सर, येस सर. त्याच्यात सिलेबस पॉपअप करण्यासाठी आपल्याला मॉडिफिकेशन करावं लागेल. तर आता आपण जे काय बनवलंय ते आज क्लस्टर म्हणून बनवलेलं नाहीये. आता नवीन इयर जरी आपला डिप्लोमाचा आला तर डिप्लोमा कॉलेजला स्वतंत्र धरून आलेला आहे. येस सर, येस सर. मग बदल तर भरपूर करावे लागतील, म्हणून 10 वर्ष दिलेत तुम्हाला. येस सर, येस सर. थँक्यू सर. खूप इन्फॉर्मेटिव्ह सेक्शन होता सर. थँक्यू. हॅलो. या बोलो. हा नमस्ते सर, मी केतकी पाटील आहे. मला सर 1-2-3 क्वेश्चन विचारायचे आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन असं आहे की आता आपण बघतो की आपल्याकडे जे ऍडमिशन्स होतात डिग्रीला असू दे, डिप्लोमाला असू दे, तर त्याची जी स्क्रीनिंग केली जाते ऍडमिशनला एलिजिबिलिटी मध्ये, तर इन्फ्लामेशन जे झालेलं आहे किंवा स्वेलिंग जे झालेलं आहे मार्क्सचं 12वीला किंवा 10वीच्या दरम्यान जे प्री स्कूल, तर त्याच्यामुळे होते काय की प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट्स किंवा युनिव्हर्सिटीज असतील किंवा ऑटोनॉमस जसे डीम टू बी असतील तर त्यांची स्वतःची एंट्रन्स असते. त्याच्यामुळं गुड क्वालिटी आणि ऍप्टिट्यूड असलेले स्टुडंट तिकडे ऍडमिशन घेऊ शकतात. त्याच्यामुळं आउटकम बेसिसवरती ते खूप सक्सेसफुल राहतात ऍज अ इन्स्टिट्यूट ऑर युनिव्हर्सिटी. पण जनरली मेनस्ट्रीम जे कॉलेजेस आहेत, जे ऑटोनॉमस नाहीत, अफिलिएटेड आहेत एखाद्या ग्रँटेड युनिव्हर्सिटीजला, तर तिथे सर अशी स्क्रुटिनी होत नाही एलिजिबिलिटी क्रायटेरियामध्ये. आणि जो इनपुट आपल्या कॉलेजेसमध्ये येतो तो असा पुअर असतो की ते कॅपेबल नसतात की त्यांना काही जसं आपण ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड किंवा क्रिएशन ओरिएंटेड क्रिएटिव्ह क्वेश्चन जर आपण त्यांना विचारले तर त्यांची कॉम्प्रिहेन्शन कॅपॅसिटी सर तेवढी नसते की टीच केलेला जो कंटेंट आहे त्याचं प्रोसेसिंग करून ते एक म्हणतो ना इनोव्हेटिव्ह वे मध्ये त्याचं इम्प्लिमेंट करतील. इनफॅक्ट माझा एक्सपिरियन्स असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून असा राहिलेला आहे की आता करोना काळामध्ये 2-3 वर्ष जेव्हा लॉकडाऊन होता तेव्हा त्यांना लॉकडाऊन मध्ये ऑनलाईन एक्झामची सर सवय झाली. आणि ज्यावेळी इंटरनल असेसमेंटमध्ये आम्ही डिस्क्रिप्टिव्ह एक्झाम ठेवली त्यावेळी त्यांना इतकं टेन्शन आलं की 4 दिवस एक क्लास ऍबसेंटच राहिला सर. जस्ट टू म्हणजे इतके वरीड झाले ते की आम्हाला कळलं मला तुमचं. सर मग NEP 2020चा जो ड्राफ्ट आहे त्याच्यामध्ये असे जे इन्स्टिट्यूट मेनस्ट्रीम किंवा अफिलिएटेड कॉलेजेस आहेत तिथे एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया थोडा रेज केला जावा, याच्यासाठी काही प्रोव्हिजन आहे का किंवा तशी काही करता येईल का? करेक्ट.
ओके, ठीक आहे. पहिलं बदल मेन काय होणार आहे, आता सर्व ऑटोनॉमस होणार आहेत, हो ना. म्हणजे माझी कॅपॅसिटी आहे, माझा स्टाफ माझ्याकडे चांगला आहे, हो ना. तर माझ्याकडे स्टुडंट यायचं, स्टुडंटला मी माझी कॅपॅसिटी दाखवलेली आहे. आतापर्यंत ऍडमिशन काय होतं, माझं कॉलेज हे पुणे युनिव्हर्सिटीला अफिलिएटेड आहे म्हणून माझी ऍडमिशन व्हायची नाही. आता ते अफिलिएशन तुमचं गेलं तर ऍज अ दॅट इन्स्टिट्यूट विल बी अ डिसाइडिंग फॅक्टर. म्हणजे मी सगळ्यात चांगलं उदाहरण देतो याचं कायम, की एक डोंगरावर वसलेली युनिव्हर्सिटी की जिथे जायला सुद्धा उडुपी पासून रस्ता नव्हता, पूर्ण डोंगर होते, हो ना. की जे साऊथ इंडियामध्ये कुठेतरी आहे, की जे दिल्लीच्या साईडला नाही, मुंबईच्या साईडला नाही, सेंट्रल भागात नाहीये, अशी मणिपाल युनिव्हर्सिटी. मी त्यांचं स्टँडर्ड कायम देतो की ती युनिव्हर्सिटीमध्ये आज जगातली लोक, भारतातली लोक तिथं जातात. म्हणजे दिल्लीचा मुलगा, मुंबईचा मुलगा, पुण्यातला मुलगा तो अशा आडवळणी जातो, उडुपीला उतरतो, उडुपीपासून टॅक्सी करून जातो. तर तिथं त्यांनी कसं काय यश मिळवलं? बरोबर सर. हेच आपल्याला घ्यायचं आहे, की माझं कॉलेज छोटं आहे का मोठं आहे. पण आज माझं कॉलेज छोटं आहे, पण तिथं माझ्याकडे 10 प्रोफेसर आहेत की जे आज नावाजलेले आहेत. त्या 10 प्रोफेसरांच्या नावावर माझं ऍडमिशन मला करायचं आहे, मला त्यांचं स्टँडर्ड ठेवायचं आहे, मला कॉलेजची उंची गाठायची, नक्की येतील ना. आणि जर का एखाद्या मोठ्या कॉलेजला मोठं म्हणायचं त्या कॉलेजला गेले, पण तिथं तेवढी सिस्टम नसेल, तर त्या मुलाला आता मी फ्रीडम दिलाय की बाबा तू पुढच्या वर्षी दुसऱ्या कॉलेजला जाऊ शकतोस, तुझी क्रेडिट बँक तयार आहे. तुला आता त्या प्रिन्सिपलला मागणी दररोज करायची गरज नाहीये की माझं मार्कलिस्ट द्या, मी मार्कलिस्ट देणार नाही, टीसी देणार नाहीये. टीसी तुम्हाला द्यावाच लागेल, कारण तो त्याला मी फ्रीडम दिलेला आहे. म्हणजे मला कॉम्पिटेटिव्हनेस आलं. ह्याचं उदाहरण देतो. बीएसएनएलचा फोन होता, त्यावेळी आम्हाला काय काय करायला लागायचं, त्या फोनचा नंबर लावायला लागायचा आणि मग तो कधीतरी यायचा गडबड करून. आता मला फोन घ्यायचा म्हणला की माझ्याकडे 10 ऑप्शन समोर आहेत. मग मी त्याच्यात फक्त फोनचं खरं काम असतं की मी बोलायचं आणि तुम्ही ऐकायचं. पण आता तेवढं बघत नाही ना, मी सर्व्हिस मला किती मिळते, म्हणून मला बीफार्मच करायचं आहे. तर बीफार्म देणारे अनेक संस्था आहेत, पण during that BPharm, what additional benefits I get, what standard that college has developed, this is more important, correct? So if I compare with the phone is for just communication, but nowadays we are not taking that phone or that service for communication, but I see that what additional facilities, value added things I get. In the similar line, whether it is small or big institute, we have to raise your standard. If you raise your standard, and it will be like a now Vodafone Idea and all this, correct? That customer is a student, he have all the rights to select their product, means a college, as per what he think. Secondly speaking, really, suppose the kid want to have a expertise in the music, though he is a pharmacy, okay, he will definitely see that any pharmacy college which is having a tie-up with the performance art. Why not? Because he is feeling. If any person want to become a manager, definitely he will see that this pharmacy college having the cluster with the management college. Likewise, so what capacities you are building in your college is more important, because there will not be any tagline of university, not LMCP, that Gujarat college, LMCP will be owned, ICT will be owned, Bharati Vidyapeeth will be owned. Every college, Sinhagad, again Sinhagad group will make their university likewise, and they have to prove their selves. त्यामुळं कंडिशन त्याच राहतील एलबीडीच्या, तुमचं स्टँडर्ड तुम्ही वाढवावं आणि तुमच्याकडे मुलं अट्रॅक्ट होतील. ओके सर, थँक्यू सर. सर माझा अजून एक क्वेश्चन आहे. तो असा आहे की आताच्या सेशन मध्ये जसं तुम्ही बोललात की it will be our responsibility to retain the students in our institute or university. Yes. If we are providing them education of standards with which are at par, then they will retain and complete the whatever the duration of the course is for the program. Yes. पण मला विचारायचं होतं की ज्यावेळी हा NEP ड्राफ्ट डिझाईन केलेला आहे, मे बी गव्हर्नमेंट हॅड इट इन इट्स माइंड की तुम्हाला मल्टीफॅसेटेड स्टुडंट्स आणि जे एम्प्लॉयबिलिटीचे असतील तसे डेव्हलप करावेत. तर सायकोसोशल जो टेम्परामेंट राहील त्या विद्यार्थ्यांचा
त्याच्यानुसार ते चॉईसेस करणार आहेत सर. आणि हे लिटल बिट ऑफ सर्कस सारखं असणार आहे की त्यांना जर असं वाटलं की आता ह्युमॅनिटीज मध्ये जावं तर ते ह्युमॅनिटीज मध्ये जातील, मॅनेजमेंट मध्ये जातील, परत येतील आणि आपला कोर्स कम्प्लीट करतील. बरोबर. ही जी चॉईस आपण त्यांना ऑफर करतोय विद्यार्थ्यांना आणि जी डायनामिक राहणार आहे ऑन देअर पार्ट. करेक्ट. तर सर त्याचं जे क्रेडिट आहे ते आपण असं ऍट्रिब्यूट करणं बरोबर राहील का की इन्स्टिट्यूट इज लॅकिंग इन प्रोव्हाइडिंग गुड एज्युकेशन टू देम. कारण त्यांचे चॉईसेस हे मला असं वाटतं की काय म्हणतो आपण सायकोसोशल. समजा तुम्हाला असं घ्या उदाहरण, तुम्ही कुठल्या कॉलेजच्या आहात? सर डॉक्टर शिवाजीराव कदम कॉलेज ऑफ फार्मसी. बरोबर. आता माझ्या एका विद्यार्थ्याला शेतीविषयक खूप आवड आहे, फार्मसीचा आहे त्याला, पण त्याला शेतीविषयक आहे, त्याला पुण्यात नाही राहायचंय, त्याला सांगलीला जायचंय आणि सांगलीला शुगर केन रिलेटेड जे काही फार्मा मधला रिसर्च आहे किंवा ग्रेप रिलेटेड फार्मा मधला रिसर्च तो त्याला करायचा आहे. तर त्याला आवड झाली तर तो सांगलीला येणार ना, डायरेक्ट डॉक्टर शिवाजीराव कदम इन्स्टिट्यूटला येणार सांगलीमध्ये, कारण त्याला ती चॉईस मिळाली. पण ज्याला मॅनेजर व्हायचं होतं तो नाही, मला हायफाय पाहिजे, मला थोडं मॅनेजर व्हायचं आहे, सिटीमध्ये राहायचंय, तो पुण्याला येईल. तर इथे झालंय की आता इथे आपण त्यांना स्कोप देतोय त्यांच्या आवडीसाठी. आणि त्यांना जर का माझी जी कॅपॅसिटी आहे, माझ्या कॉलेजला एकदम हाय फंडा कॉलेज म्हणजे असेल असं पण नाही, जी माझी कॅपॅसिटी आहे, म्हणजे मला हाय फंडा म्हणजे म्हणायचं होतं की माझी अपेक्षा असेल नसेल की टाटा कन्सल्टन्सी माझ्या सांगलीत यावी, नसेल पण कदाचित तिथे पुण्यात आहे, मुंबईत आहे, पण तुमच्याकडे काय आहे हे दुसऱ्यांच्याकडे नाही ना. म्हणून प्रत्येकानं मुलांना ओळखायचंय मला आवड काय आहे आणि कॉलेजनं माझ्या फॅसिलिटी तयार करायचे. आय शुड क्रिएट माय फॅसिलिटीज. फॅसेट्स वेगवेगळे पाहिजेत, मल्टीडिसिप्लिन पाहिजेत. माझ्याकडे आला तर तुम्ही हे शिकू शकता, ह्या दर्जाचं शिकू शकता, हे माझ्याकडे पाहिजे. मग ज्याला रिसर्चच करायचं आहे तो माझ्यासारख्या संस्थेत येईल. ज्याला ऍग्रिकल्चरचं काही काम करायचंय, रुरल बेस्ड करायचंय, एखाद्याला समजा सोशल सर्व्हिसेस करायचे, कुष्ठरोग्यांची सर्व्हिस करायचे, ज्यांनी कुठेतरी टायअप झाले त्याच्याबरोबर काम करेल. तर ह्या मी सगळ्या आज सुविधा उपलब्ध करून देतोय. ज्याला फोनच घ्यायचा होता तो अजून वोडाफोनचा फोन घेण्याऐवजी, आयडियाचा फोन घेण्याऐवजी BSNLचा फोन घेऊ शकत होता. पण तो आता आयडियाला का आला? कारण त्याला अजून त्याच्यावर सगळे चॅनल पण बघायचे आहेत, OTT पण बघायचंय. ते OTT आता कोण चांगलं देतंय मला, हे सगळं बघायचंय ना. म्हणून आता आपण ओपननेस आणतोय एज्युकेशन मध्ये, एवढं म्हणायला हरकत नाही. सर माझा शेवटचा क्वेश्चन, आय एम सॉरी बट आय हॅव वन मोर क्वेश्चन. सर आता अपकमिंग डेकेडमध्ये ज्यावेळी NEPचं इम्प्लिमेंटेशन आपण करू, तर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह मधून टेक्निकली फॅकल्टी रिक्वायरमेंट ही डायनामिक राहील का स्टॅटिक राहील? तोच मला प्रश्न आहे, तो तिथे होता म्हणून मी त्याच्यावर रेड करून बोललेलो आहे. स्टुडंटला तरी आम्ही फ्रीडम दिलाय, तू आज इथून उद्या तिथे, पण फॅकल्टी ही पूर्ण वेळ पाहिजे आणि तिथे पक्की पाहिजे असं लिहिलंय. हे कसं काय शक्य होणार? हे शक्य होऊ शकतं जर का मी माझी कॅपॅसिटी कॉलेजने एवढी तयार केली की काही झालं तरी आपल्या मुलांचा जो नंबर आहे तेवढाच राहणार आहे, कारण माझ्याकडे चांगला स्टाफ आहे. मग ह्याचा फायदा काय होईल? जी आज पळवाट काढतात स्टाफसाठी, पेपरवरचा स्टाफ, बिनपगारी स्टाफ, इनएक्सपेन्सिव्ह स्टाफ, हे सगळं त्यांना बंद करावं लागेल, ओके नाही? आणि त्यांना सांगावं लागेल की माझ्याकडे स्टाफ हा परमनंट आहे, एवढा पीएड आहे, एवढा धडपडणारा स्टाफ आहे, परसेप्शन निर्माण करावं लागेल. त्यामुळे आपल्या स्टाफ सगळ्या लोकांना पॉझिटिव्ह आहे, कारण जो चांगला माणूस आहे त्याला किंमत मिळणार आहे. ओपननेस आणि कॉम्पिटिशनचा फायदा एवढा होतो की तुम्हाला कॉम्पिटिटिव्ह जर तुम्ही असाल तर तुमचा ग्रोथ होतो. आता फायदा काय होतो? 2 कॉलेजेस चांगली त्या युनिव्हर्सिटीतली, 4 खराब असली तरी त्या पुणे युनिव्हर्सिटीच्या नावावर मुंबई युनिव्हर्सिटीचं नाव चालून जायची. आता तसं नाही, आता प्रत्येकाला झगडावं लागेल, प्रत्येकाला स्वतःचं स्टँडर्ड वाढवावं लागेल. सो थिंग इज दॅट ड्यू टू द ओपननेस अँड कॉम्पिटिशन एव्हरीबडी हॅज टू रेज देअर स्टँडर्ड्स. माल प्रॅक्टिसेस, ऍडजस्टमेंट्स विल डेफिनेटली गेट लोअर अँड लोअर डे बाय डे. ओके, थँक्यू सो मच सर. सेशन खूपच इन्फॉर्मेटिव्ह होता. थँक्स अ लॉट. थँक्यू. Jain sir. Sir, one question is asked by the participant that is there any requirement to make time frame for the completion of PhD degree? नहीं, बच्चा मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटी है तो, हाँ यही बोलने का था. अभी हमारे सामने लड़के आते हैं वो 20 साल 22 साल के रहते हैं. गारंटी ऐसी भी नहीं है कि बाप बन के भी आएगा उधर,
45 ईयर्स का भी आ जाएगा, B.Pharm सेकंड ईयर 4th ईयर में वो मेडिकल स्टोर डालेगा, उसको लगेगा अभी मेरा डिग्री था, डिप्लोमा किया था, मैंने मेडिकल स्टोर किया, MR गिरी की, अभी मुझे थोड़ा पढ़ना है, ये भी हो सकता है आगे आगे जाके। वहां कुछ लिखा नहीं, और क्यों लिखे भाई, मुझे पढ़ना है, मेरे 50 ईयर्स में भी मुझे पढ़ना है B.Pharm, व्हाई यू चैलेंज दैट, नहीं 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 अभी आपका एज गया, आपको नहीं करना है, तो और मेरे ख्याल से लॉजिकल भी नहीं है। सो इज अनदर पॉइंट मे बी दैट यू विल हैव अ मिक्स्ड स्टूडेंट्स, एज वाइज भी अलग अलग हो सकता है। सर प्रोबेबल ईयर ऑफ इम्प्लिमेंटेशन क्या हो सकता है? इम्प्लिमेंटेशन तर मागच्या वर्षी होतं, पण हे कोरोनामुळे स्लो चाललंय. They mentioned 2 decades. One decade is for implementation, another decade is to see the outcomes and proper. And 2040 से पूरा इंडिया NEP से चलेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। बहुत अच्छा सेशन रहा सर, बहुत इंफॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, thank you. You have discussed the objective of the education to gain knowledge, not degree. Rather than percentage or marks, we should think about the student capacity in real life. What is missing in the examination system? We should create a case to improve the thinking skill, especially creative and critical thinking needed for the innovation. We should adopt the concept of the flipped classroom, and this should be utilized. Teaching should be more experiential, and holistic education as well as multidisciplinary approach should be included. Campus should work as a cluster, and there should be multiple entry and exit system. By getting the autonomy, we can design the own syllabus. We can also give the contribution for the student fee. There will be a central regulation. The system should be light but not tight. You have also discussed about the PSSB, NRF, and institute should have the plan for 5 years, 10 years, and 15 years. Thank you, sir. Thank you for the informative speech and very interactive session. Thank you. Sir, now I am sharing the e-bouquet. Next lecture will be at? Sir, next lecture will be at 2:30 Okay. PM. Yeah. And yes, sir. Yes, sir. Sir, this is the e-bouquet and this is the certificate, sir. Thank you, sir. Thank you. And thank you, everyone. So, dear participants, we